हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल। हम आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सरफेस ऑफ कार्टेशियन के बारे में, मतलब सरफेस ऑफ वॉल्यूम का रिवॉल्व कराते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है ये मैंने पढ़ा था। तो मैंने वापस एक बार लिख दिया है। सरफेस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अबाउट वाई एक्सिस मैंने बता दिया था। वाई एक्सिस के अंदर क्या था, इंटीग्रल सी टू डी 2 पाई एक्स डॉट डी एस। डी एस क्या है, लेंथ ऑफ कर्व, जिसकी वैल्यू √1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर डॉट डी वाई होती है। और यही मैंने एक्स एक्सिस के हिसाब से निकालूँ तो इंटीग्रल ए टू बी 2 पाई वाई डॉट डी एस, और यहाँ पर डी एस की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी। करना कुछ नहीं, इसमें हमको सिंपल सी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर कोई भी इक्वेशन देंगे, उस इक्वेशन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फिर उसको उसमें पुट करना है और लिमिट लगानी है। अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में है तो वाई की लिमिट, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में है तो एक्स की लिमिट। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, अब नया वाला टॉपिक, इस टॉपिक का जो हेडिंग है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब हम पढ़ेंगे सरफेसेस ऑफ कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो मैं पहले एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो जो स्टेटमेंट है, इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज़ गिवन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वेशन कर्व की पोलर कोऑर्डिनेट्स में दी हुई है जो कि r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, देन द कर्व रिवॉल्व अराउंड द इनिशियल लाइन। अब यहाँ पर इनिशियल लाइन के अराउंड अगर रिवॉल्व करवाएं तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस का फॉर्मूला इंटीग्रल लिमिट अल्फ़ा टू बीटा। अभी जो अल्फ़ा टू बीटा है, दिस इज लिमिट ऑफ थीटा। ठीक है, इज अल्फ़ा टू बीटा 2 पाई इंटू एक्स डॉट डी एस। डी एस तो सेम चीज़ है जैसा था, एक्स भी सेम चीज़ जैसा पहला वाला फॉर्मूला था। इसमें क्या है, यहाँ पर डी थीटा मैंने ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या होगा, अब हमको ध्यान है वेयर, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन तो भी लिख देता हूँ कि x की जो वैल्यू होती है वो r cos थीटा के बराबर होती है और y की वैल्यू r sin थीटा के बराबर होती है। तो बस जो इसमें यहाँ x था ना, उसका हमने क्या लिखा, r sin थीटा, और जो डी एस बाई डी थीटा है इसको हम ये लिखेंगे। देखो, मैं आपको वापस से प्रूफ करके नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर दो। बस ये जो आर स्क्वायर और ये चीज़ दो इक्वेशन, इसको अगर प्रूफ करेंगे ना तो डी एस की वैल्यू जो होती है ना, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या पढ़ते हैं, डी एस की वैल्यू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये पढ़ते हैं ना, यही है, यही सेम चीज़ है ये। आप तो बस क्या ये वाला फॉर्मूला याद कर दो कि अगर पोलर कोऑर्डिनेट में बात करें तो 2 पाई के बाद में r साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय √r² प्लस डी थीटा का होल स्क्वायर डॉट डी थीटा। ठीक है, ये एक तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बाद में एग्जांपल लिखता हूँ। तो जो क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड फॉर्म बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ कार्डियोइड r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अबाउट इट्स इनिशियल लाइन। ठीक है, सॉल्यूशन में लिख देता हूँ। यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ कि गिवन दैट इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन इक्वल टू r इज इक्वल टू a प्लस कॉस थीटा, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, हम फॉर्मूले में डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू निकालते हैं, जिसकी वैल्यू रूट के अंदर r² प्लस डी आर बाई डी थीटा आती है। तो मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल टू √r² प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। तो इसके लिए डी आर बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी हैव डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू -a साइन थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2।
then putting equation 2 in ds by d theta formula. So ds by d theta formula is what? Under root r square plus dr by d theta whole square. Then what is the value of r square? According to the question, r square is equal to square of a plus a multiplied by 1 plus cos theta. Then directly a square 1 plus cos theta whole square plus dr by d theta whole square. This is dr by d theta minus a times sin theta. Square of minus a sin theta is a square sin square theta. ठीक, ओके इसके बाद में जब हम करेंगे then simplifying a square plus a square cos square theta plus 2a square cos theta plus a square sin theta, and simplifying a square cos square theta plus a square sin square theta equal to a square. Then here a square plus a square is equal to 2a square, and this term as it is again 2a square cos theta, and taking common 2a square 1 plus cos theta, and converting this 1 plus cos theta into cos 2 theta formula, then we have 2a square dot 2 times of cos square theta by 2. So finally we have ds by d theta equal to 2a cos theta by 2. This is equation, I guess, the third equation. So now first of all we have to write the formula. So the surface of solid revolve about initial line is, what is the formula? Limit of theta alpha to beta 2 pi x dot ds by d theta dot d theta, and after putting the values we have 2 pi r sin theta into what is the value of ds, r square plus dr by d theta whole square dot d theta. In here we have to find the limits of alpha and beta, means limit of theta. So first of all we have to find the maximum value and the minimum value of r. So I am writing the value of r according to question 1 plus cos theta. So what can we find? If we have to find the value of r maximum, then there should be 2a. So how can we get 2a? So to get 2a we have to put the value of cos theta equal to 1, and when the cos theta equal to 1, that it means we have to put theta is equal to 0, in which r is equal to a into 1 plus cos theta, means cos 0 is 1, then we have r is equal to 2a, which is maximum value. And for the minimum value, that is r is equal, for the value of r equal to 0, we have to put the value of cos theta equal to minus 1. So to find the value of cos theta equal to minus 1, we have to put the theta equal to pi, because cos pi is minus 1, which gives r equal to 0. So we have here now two limits. Lower limit is theta equal to 0 and the upper limit is theta equal to pi. So putting all the equation in above formula, we have 0 to pi 2 times of pi r sin theta, and the value of ds by d theta from equation 3 is equal to 2a cos theta by 2. 2a cos theta by 2 d theta. So here we have different variable which is r. So from question it is given the value of r is a into 1 plus cos theta dot sin theta dot 2a cos theta by 2 dot dt. Then taking out the constant terms out of integral, the 2 pi 2a and a, we have 4 pi a square, then integral 0 to pi
and after changing 1 plus cos theta to theta by 2 form, we have 2 times of cos square theta by 2, and changing sin theta to 2 sin theta by 2 cos theta by 2 into 2a is already taken, into cos theta by 2 into d theta. Now again taking constant term outside the integral, we have 16 pi a square integral 0 to pi sin theta by 2 into cos to the power 4 theta by 2 dot d theta. So this is not pi by, this is pi. So solving to solve this, we have to find the limit 0 to pi by 2 if we have to solve it to like gamma functions. So for making the limit pi by 2, we need to let this equation let theta by 2 is equal to t. Then on differentiating, we have 2 times of dt is equal to d theta. And if limit is changing, yes, limit will be definitely changed. If we have value of theta equal to 0, then the value of t is also 0. And if value of theta is equal to pi, then the value of t is equal to pi by 2. So putting this equation or simply changing, we have 0 to pi by 2 limit, and sin t dot cos to the power 4 t, and the value of d theta is less 2 times of dt. So finally I'm writing it as 32 pi a square 0 to pi by 2 sin t into cos to the power 4 t dot dt. So solving by gamma function, 32 pi a square is equal to gamma 1 plus 1 upon 2 and gamma 4 plus 1 by 2 upon 2 times of gamma 1 plus 4 plus 1 by 2. So what we have, 32 pi square, this is gamma 1 will be 1, definitely multiply by gamma 5 by 2 will be equal to 3 by 2 into 1 by 2 into root pi upon 2 times of 4 plus 1 5 plus 6 3, then this is value equal to 2 is to 1. Solving this equation, we have 2 2 4 4, this is 8, and so final equation is 8 into 3 is 24 by 4 into pi root pi a square, which is final equal to 6 pi root pi into a square. Okay, I've done some mistake. Here formula is 1 plus m plus n plus 2. Then we have here 2 into, this is 7 by 2, which means 5 by 2 into 3 by 2 into 1 by 2, and this is root pi. Cancelling root pi, half, this will be cancelled. So we have left with 32 pi a square upon 5 is the answer. So basically after using this type of formula, हम easily क्या है पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि सरफेस जो फॉर्मूला होता है, इसमें जो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी हुई होती है, सो उसका जो सॉल्यूशन होता है, उसका कैसे मतलब आंसर निकलता है सरफेस का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. ठीक है, थैंक यू. और बाकी ऐसा आपको लगे खूब सारे क्वेश्चन अभी हो नहीं रहे हैं, तो मैं ये सब एक बार कॉन्सेप्ट होने के बाद में लास्ट में क्वेश्चंस की मैराथन सीरीज़ निकालूंगा, जिसमें पूरा मतलब कम से कम 50-60 क्वेश्चन एक साथ आपको सॉल्व करके बताऊंगा. हाँ, नो डाउट बड़े बड़े क्वेश्चन है, 10-10 मिनट में एक क्वेश्चन होगा. अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, थैंक यू.